the BJP. Rohanji, namaskar, and I want to understand ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो हम जानते हैं, बट क्यों नमस्कार। हुआ? एंड आई एम नमस्कार, बताइए व्हाट वाज द लास्ट स्ट्रॉ? क्योंकि उस समय तो जो खबर आई थी कि योर फादर वाज नॉट वेल, आपने कहा कि आपने ह्यूमिलिएशन की बात तो की, बट यू विथड्रू योर लोकसभा कैंडिडेचर, यू सेड आपके पिताजी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, फिर आपने बीजेपी अब ज्वाइन कर ली। आपके लिए टिपिंग पॉइंट क्या था, लास्ट स्ट्रॉ क्या था? देखिए वर्का जी, you know me that I have been representing Congress Party for last 15 years as a worker also, as national spokesperson also, as a chairman of social media also. और कभी हमने सत्ता नहीं देखी है. I have not seen power from the time I am here, but I have never expected that. I just पार्टी ने जो काम दिया, most important thing was the self respect. वो मेंटेन होता था, पार्टी नए काम देती थी, हम नए काम करते थे. But the way I see party in last 2 years, after change in communication department, after the new in charge has taken over, I think both on personal side, on the side of self-respect, and both on the narrative of the party, it has taken party to such a level that there is no point of return. On the same time, people like us who are here in party not to take something, Barkaji, to give something. We have always given something, and we used to respect party like our mother. उसका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपने 2 साल जो चीज सहन की, यू फील दैट नाउ इट्स टाइम टू गो. आपका दिल टूट जाता है, मन उठ जाता है. That's what happened to me. I'll give you small thing of what happened to me exactly. When party told me to fight from Ahmedabad, that seat party used to lose by 4.5 lakh, 5 lakh votes for last so many elections. But still I decided, no, party has told me I'll fight this election, and I started my preparation with great zeal. On 12th of March, my name was declared, and 13th March से लेके 17th March till the time unfortunate event happened, I was on road with workers. I decided the date of my Karyalaya opening and all. On 18th of March, my father was admitted. He was not in favor that I should fight election due to whatever. He also fought from Ahmedabad in 2004. So somehow he had this bad memories, and he had bypass surgery 15 years back. So that day he told me that no, you will not fight. And he was admitted with, heart rate of only 25, and it was a critical situation. So only thing I was left with is to ensure that my ambitions of fighting elections are broken, are crushed, and I have to save my family. That was the only objective. I called the local leaders, told them this is my situation. They were with me. And then I decided to withdraw my candidature. I informed party that whoever is the new candidate, I will support with whatever my resources or my time and all. After that, my father was in hospital for at least around 10 days. None of the party leaders, I'm telling you, I'm national spokesperson for last, I think 2 years now. None of the party leaders even called. I got to know that forget about calling. The conspiracies were planted by the same leader to ensure that my name is bad, my negative narrative that Rohan Gupta has been doing this, Rohan Gupta is doing that, which have been accusing me for last 2 years. Then that day night, I decided that the party for which I gave last 15 years, if nobody can even call me and they cannot trust me, that fact that Rohan cannot do this, it is because of his personal compulsion. Everybody can have personal compulsion. I decided to, resign from the party. I took 20 days, Barkaji. Had it been planned, I could have joined, BJP next day. I took 20 days to take this decision. It was not easy decision for me. Apart from that, Barkaji, last 2 years, I'll just give you a small brief. The way I was treated, from the time that gentleman became communication in charge, you have not seen a single press conference from Delhi where I have been there. I'm challenging to show one press conference because I was not allowed. The bad words were used against me. I was not given any responsibility in Bharat Jodo Yatra. In Gujarat state election, I was totally, sidelined. All these things I tolerated. Okay, it's a part of party. You are part of politics. It's okay, all fine. But when it came to my personal family issue and I faced the same humiliation, I think it was time for me to go. And that is why with heavy heart, broken heart, I took this decision. It was not easy for me. But somewhere, some point of time, for self-respect, you have to compromise everything. And that's what I did. Now, obviously, it was not an easy decision for you, रोहन जी. लेकिन क्या आपका रेफरेंस एविडेंटली जयराम रमेश से है? क्योंकि आपने एक और बयान में बोला, अ कम्युनिकेशंस इन चार्ज विद राम इन हिज नेम. अब मैं तो एक ही इंसान कांग्रेस के लीडर को जानती हूँ जिनके नाम में राम है. इज योर रेफरेंस टू जयराम?
And what was the specific problem with Mr. Jairam Ramesh? You also said at your press conference when you joined the BJP कि आपकी और उनकी difference of opinion बहुत से मुद्दों को लेके भी थी, जो उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म पे कमेंट था, जो इंडिया अलायंस का नाम रखा गया इंडिया, उससे लेके मतभेद थे. So obviously पहले बताइए your references to Jairam Ramesh, correct? See, I don't want to name anybody, but yeah, obviously, if somebody is in charge, you can understand. There is no point in naming. And generally, Okay. Barkaji, this is not my nature कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बोलूं, but I was deeply hurt. That's why I took the reference also. Barkaji, जब से from the time new communication department came and the in charge was changed, very important thing for any party to ensure that there is no contradiction in your narrative. अगर विरोधाभास है तो विश्वसनीयता नहीं आएगी. अगर आपके नैरेटिव में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, पीपल विल नेवर ट्रस्ट यू. जब सनातन का जब डीएमके के लीडर ने सनातन का अपमान किया, वी वर ऑल, इट इज नॉट अबाउट मी, ऑल द स्पोक्सपर्सन स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड टू हिम दैट नो, वी हैव टू एंश्योर दैट वी काउंटर दिस, वी हैव टू डू विरोध. हमको बोलना पड़ेगा ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं है और हम विरोध करते हैं. एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने नहीं की. यू टेल मी वन प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर कांग्रेस पार्टी डिड द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टोल्ड दैट नो वी आर अगेंस्ट दिस स्टैंड. नो, वो नहीं हुआ. जाने दीजिए. राम मंदिर की चीज आई, हमारा ओपिनियन मांगा गया. हमने कहा कि इफ यू आर सेइंग दैट वी आर अग्रीइंग विद द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग देयर. व्हाट इज रॉन्ग? It is the aspiration of people of the country. It's not about political issue. If you don't go, then it becomes political issue. If you go and do your worship, where is the political issue? But नहीं, वो भी नहीं हुआ. वो जाने दीजिए. जो नाम का अलायंस, भारत देश के नाम का अलायंस बनाया गया, वहां पे आप उस आदमी से अलायंस कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ खालिस्तान से मिला होने का आरोप हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने किया है. उनकी एक्साइज का जो स्कैंडल हुआ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने की है. इफ नाउ कांग्रेस पार्टी फॉर्म अलायंस, तो वो चीज जनता कैसे भूल सकती है? यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड, वी हैव टू रिप्रेजेंट पार्टी ऑन मीडिया. यू टेल मी विद सच कॉन्ट्राडिक्शंस, हाउ कैन वी फेस द मीडिया और द पीपल? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, द इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको यहाँ पे दिल्ली में बैठ के हम लोग पार्टी कोसती रहती थी, उनके साथ अब राजस्थान में एमओयू कर रहे हैं, अब तेलंगाना में एमओयू कर रहे हैं. What is, where is the consistency in your policy? You are not clear what you are doing. आप ईवीएम को बोल रहे हैं कि ईवीएम के कारण, 2 टाइम ईवीएम जब थे तब आप चुनाव जीते हैं, आप ईवीएम को कोस रहे हैं. ओपीएस जो बात कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, सेंट्रल के मैनिफेस्टो से आपका ओपीएस चले जाते हैं. एंड नॉट मी, बरका जी, कितने यंग लीडर्स ने पार्टी को छोड़ा है? क्यों? इफ यू कैन जस्ट टेल दैट ओके, इसकी लालच है, डर है. मेरे लिए क्या है? ना लालच है ना डर है. ना मैं तो पावर में नहीं रहा हूं कि मैंने कुछ गलत किया हो तो मेरी कोई लालच हो, ना कोई डर है. So what we need to, party needs to introspect one thing, that everybody goes. If you will not learn the lessons, it is going to be more difficult. I am going after 15 years. अगर मैं जाता हूं, तब पार्टी को समझना पड़ेगा कि इतने अगर वर्कर जाते हैं तो उसका रीजन क्या है. You cannot